हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू RangCanvas लिटिल स्टार्स आर्ट रूम। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ एक ड्राइंग विद ऑयल पेस्टल कलर। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ड्राइंग। तो फ्रेंड्स, मैं ड्राइंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पहले एक स्नोमैन ड्राइंग कर रही हूँ। स्नोमैन के हेड ड्राइंग कर रही हूँ मैं पहले। फ्रेंड्स, मैं लाइन ड्राइंग के लिए ब्लैक स्केच पेन यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो आप पेंसिल यूज कर सकती हो और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले पेंसिल से ही ड्राइंग करो, क्योंकि ड्राइंग करते वक्त अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो अगर आप पेंसिल से करोगे तो आप उसको इजीली रब कर सकोगे। इसलिए पहले आप पेंसिल से ड्राइंग करो, उसके ऊपर ब्लैक स्केच पेन का बॉर्डर कर लो। अब मैं बॉडी ड्राइंग कर रही हूँ। अब मैं लैंड पोर्शन ड्राइंग कर रही हूँ। अब मैं एक क्रिसमस ट्री ड्राइंग कर रही हूँ, बड़ा वाला। आप पहले लाइन ड्राइंग अच्छी तरीके से फॉलो करो, क्योंकि आप अगर लाइन ड्राइंग फॉलो नहीं करोगे तो आप कर नहीं पाओगे। पहले अच्छी तरीके से फॉलो करो, उसके बाद करो। अब मैं और एक क्रिसमस ट्री ड्राइंग कर रही हूँ। अब मैं एक ट्री ट्रंक ड्राइंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही वेरी इजी एंड स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग देखना चाहते हो तो RangCanvas लिटिल स्टार्स आर्ट रूम देखते रहिए, क्योंकि इस चैनल में हम वेरी इजी एंड स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग दिखा रहे हैं। ये ड्राइंग आपको स्कूल प्रोजेक्ट में भी हेल्प करेगा। अब मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है कलर की, और इस ड्राइंग में मैं जो जो कलर यूज करने वाली हूँ वो मैंने ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए करते हैं कलर। फ्रेंड्स, अब मैं कलर स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पहले अल्ट्रामैरीन ब्लू कलर यूज कर रही हूँ स्काई में, और मैंने इस ड्राइंग में फ्रेंड्स जो जो कलर यूज किया है सब मैंने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और मेरा वीडियो में भी मेंशन किया हुआ है। नाउ लाइट ब्लू, और मैं कौन सा पेज यूज किया है, कौन सा कलर यूज किया है, पेज साइज क्या है, ये सब भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप ये सब मटेरियल्स बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके क्लिक करके भी आप वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। अब देख रहे हो ना फ्रेंड्स, मैं कैसे धीरे धीरे ये लाइट ब्लू कलर कर रही हूँ। ज्यादा डार्क करके नहीं लगाना है। अब मैं व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ
और मैंने फ्रेंड्स इस ड्राइंग में जो जो कलर यूज किया है वो पर्टिकुलर कलर अगर आपके पास नहीं है तो उसका सिमिलर जो भी कलर आपके पास है आप उससे ही करो। अब मैं इसको फिंगर से रब करके ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ लाइट ब्लू अगेन। White again. अब मैं डार्क ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। Now leaf green. लेमन येलो। फ्रेंड्स आई होप आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो और अगर आप अच्छी तरीके से ये वीडियो को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख पाओगे इस ड्राइंग से। अब मैं बफ कलर यूज कर रही हूँ। Now brown. अब मैं ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल यूज कर रही हूँ ट्री ट्रंक पे डार्क टोन देने के लिए। नाउ Prussian ब्लू। नाउ ब्लैक। फ्रेंड्स ये एकदम इजी एंड स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग है। नाउ ऑरेंज। नाउ प्राइमरी रेड। अब मैं फिर से Prussian ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। Now grey rose. Now pink. और फ्रेंड्स अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। Now Scarlet. Now vermilion hue. अब मैं एम्ब्रल्ड ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। Now red again. Orange. Now light violet.
Now rose grey again. Now white. अब मैं येलो कलर यूज कर रही हूँ। Now brown. अब मैं डार्क ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। Now leaf green. Now light green. Now lemon yellow, लाइट टोन के लिए। अब मैं ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ। नाउ बफ। अब मैं सैप ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। Now leaf green. Now lemon yellow. अब मैं ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ। Now buff. अब मैं ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल यूज कर रही हूँ।
Now brilliant blue. Now light blue. अब मैं व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ। अब मैं इसको फिंगर से रब करके ब्लेंड कर रही हूँ। अब मेरा कलर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं मास्किंग टेप को रिमूव कर रही हूँ। वेरी स्लोली एंड केयरफुली ये मास्किंग टेप को रिमूव करना है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ड्राइंग। तो कैसा लगा आपको ये ड्राइंग? अगर ये ड्राइंग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।